Hello students, today's topic is capitalist economy. Let's start with the meaning of capitalist economy. Capitalism is an economic system in which all means of production are owned and controlled by private individuals for the profit motive. So capitalism एक economic system है जिसमें जितने भी means of production है, all means of production they are owned and controlled by the private individuals for the profit motive. Ideally, the government has a limited role in the management of the economic affairs under this system. गवर्नमेंट का बहुत ही मिनिमल रोल रहता है, यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड रोल रहता है, ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं रहती है गवर्नमेंट की इन द मैनेजमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अंडर दिस सिस्टम. Some examples of a capitalist economy may include United States, United Kingdom, Hong Kong, South Korea, etc. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के. An economy is called capitalist or a free market economy or laissez-faire economy. तो आपको पता होना चाहिए, अगर एग्जाम में वो आपसे ज़रूरी नहीं है वो आपसे ये पूछे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, they can use other names for a capitalist economy, so you should know that it is also known as a free market economy or a laissez-faire economy. Okay. Now let's start with the features of capitalist economy. First feature that we have is right of private property and inheritance. Every individual has a right to acquire private property, to keep it, and after his death to pass it on to his inheritors. तो पहला फीचर बहुत ही सिंपल है, that there is a right of private property and inheritance, that हर एक इंडिविजुअल के पास राइट है कि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकता है, अपने पास रख सकता है, एंड आफ्टर हिज डेथ he can also pass it on to his successors or on to his inheritors. This is the first feature of capitalist economy. Next feature is freedom of enterprise and occupation. Every individual is free to take up any occupation that he likes or start any business he likes, and to enter into contracts or agreements with his fellow citizens in a manner most profitable to him. तो यहाँ पर फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज एंड ऑक्यूपेशन रहता है, हर एक इंडिविजुअल फ्री है, आप जो भी ऑक्यूपेशन स्टार्ट करना चाहे कर सकते हैं, यहाँ पर कोई भी बिजनेस जो आप चाहते हैं वो आप स्टार्ट कर सकते हैं. यू आर ऑल्सो फ्री टू एंटर इन टू कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट्स विद द फेलो सिटीजन्स इन अ मैनर विच इज मोस्ट प्रॉफिटेबल टू यू. Okay, so there is a freedom of enterprise and occupation. Next feature that we have is free market. In a capitalist economy, markets are completely free. That is, there is no monopoly and imperfections which may stop other firms to enter the market and start production. Consumers are also free to buy the goods according to their choice. तो फ्री मार्केट है, फ्री मार्केट का मतलब कि कोई मोनोपोली नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई एक सिंगल सेलर है और उसी की कंप्लीट डोमिनेंस है मार्केट के ऊपर. ठीक है, कोई मोनोपोली नहीं है, कोई इम्परफेक्शन नहीं है. एवरी फर्म इज फ्री टू एंटर द मार्केट एंड दे आर ऑल्सो फ्री टू एग्जिट फ्रॉम द मार्केट. कोई भी फर्म इजिली मार्केट में एंटर भी हो सकती है और अपनी मर्जी से एग्जिट भी कर सकती है. इन द सेम वे कंज्यूमर्स आर ऑल्सो फ्री टू बाय द गुड्स अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस. कंज्यूमर भी फ्री है, आप जो भी गुड्स परचेज करना चाहते हैं यू कैन बाय अकॉर्डिंग टू योर चॉइस. सो दिस इज अ फ्री मार्केट. Next feature is profit motive. Under capitalism, all economic activities are guided by the sole objective of profit motive. Every producer aims to maximize his profits by producing those goods whose price is maximum and cost is minimum. तो यहाँ पर जो है वो प्रॉफिट मोटिव रहता है, बिकॉज हमने पढ़ा था दैट ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स. जब कोई बिजनेसमैन है या कोई प्राइवेट इंडिविजुअल है तो ऑब्वियसली उसका जो मेन मोटिव रहेगा वो रहेगा प्रॉफिट मोटिव. अब प्रॉफिट को मैक्सिमाइज हम कैसे कर सकते हैं? देखिए, प्रॉफिट का बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है.
क्या? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू मतलब प्राइस इनटू क्वांटिटी minus total cost. This is profit. Now if we want to maximize the profit, we can do, if price is maximum, right, whose price is, so we can produce those goods whose price is maximum, or cost is minimum, because in both the cases our profits will get maximized. Clear? So there's a profit motive under capitalism. Next feature that we have is price mechanism. It is the price which equates the demand and supply of goods. For example, in case of excess demand, sellers have an incentive to raise their prices without losing sales. This increase in price leads to the reduction in demand and increase in supply. As a result of these changes, economy reaches equilibrium. देखिए प्राइस मैकेनिज्म क्या है, मैं थोड़ा समझा देता हूँ यहाँ पर. आपको याद होगा जब हमने इक्विलिब्रियम का टॉपिक किया था, on one side we are taking price, this is origin, this is quantity. So there is a price mechanism, there is no role of government, right? Government का interference तो यहाँ पर होता नहीं है. तो price determine कैसे होगा? It's simple. Where the demand and supply curve intersect, at that point the equilibrium price will be determined and the equilibrium quantity is determined. So there is a price mechanism. Okay. Second thing, for example, if there is a situation of excess demand, suppose that there is a situation of excess demand, we know that this portion is of shortage, right? Excess demand. Now how this situation will be corrected? Government तो यहाँ पर है नहीं, तो ये situation कैसे correct होगी? It will be automatically corrected through the market forces of demand and supply. How? In the situation of excess demand, sellers have an incentive to raise their prices, right? So sellers will start raising their prices. Okay. Increase in price will lead to decrease in quantity demanded and increase in quantity supplied. Decrease in quantity demanded, so there will be a upward movement along the demand curve, and increase in quantity supplied, upward movement along the supply curve. Okay, so upward movement along the demand curve and upward movement along the supply curve. These changes will continue until we reach the equilibrium point. Once the equilibrium is achieved, the situation of excess demand will be vanished and economy will again and again the quantity demanded will be equal to the quantity supplied. तो वो यही कह रहा है, ये है प्राइस मैकेनिज्म यहाँ पर, दैट अगर कोई सिचुएशन है एक्सेस डिमांड की, एक्सेस सप्लाई की, इट विल ऑटोमेटिकली बी करेक्टेड थ्रू द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. देयर इज नो नीड ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस. ओके. Next feature that we have is of competition. The producers compete with one another in selling the commodity as much as they can through the advertisement. They may also cut their prices or improve the quality of the product, or they can offer other incentives. देखिए हर एक फर्म का मेन मोटिव क्या है यहाँ पर? प्रॉफिट मोटिव. ये हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं, राइट? So in order to earn higher profits, definitely they will compete with one another. Okay. Now how can they compete? They can compete through advertisement, through advertising their product. They can also reduce the prices of their product, or they can improve the quality of their product, or they may offer some other incentives which include discounts or some other schemes on their product. So producers compete with one another. Okay. Last feature is minimum government interference. Under capitalism, the government interference in the economic activities is least. The producers and consumers are free to take independent decisions. तो यहाँ पर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस जो है वो मिनिमल रहता है, लीस्ट रहता है, एंड द प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स दे आर फ्री टू टेक इंडिपेंडेंट डिसीजंस. क्लियर?
Next, let's start with the merits of capitalism. First merit is automatic working. ऑटोमेटिक वर्किंग अभी हमने जस्ट रीड किया था प्राइस मैकेनिज्म में कि अगर कोई सिचुएशन है एक्सेस डिमांड की, सो इट विल ऑटोमेटिकली बी करेक्टेड, देर इज नो नीड ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस. ओके. Automatic working, capitalism does not require any central directing authority or the government for its functioning. The central problems of the economy, that is what to produce, how to produce, and for whom to produce, are solved with the help of प्राइस मैकेनिज्म विच इज ऑटोमेटिक. ओके. तो अगर कोई भी सिचुएशन है एक्सेस डिमांड या एक्सेस सप्लाई की, इट विल ऑटोमेटिकली बी करेक्टेड थ्रू द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी सेंट्रल डायरेक्टिंग अथॉरिटी और गवर्नमेंट फॉर इट्स फंक्शनिंग. क्लियर? दिस द फर्स्ट मेरिट ऑफ कैपिटलिज्म. नेक्स्ट मेरिट इज हायर एफिशिएंसी एंड इंसेंटिव टू हार्ड वर्क. Under capitalism, the entrepreneurs are induced to work hard and work more efficiently to earn higher profits. The hard-working and the more efficient laborers get higher wages, which act as an incentive for the others also. In this way, the total output of the country increases. तो हमने जब एक फीचर हमने रीड किया था प्रॉफिट मोटिव, उसी से ये पॉइंट रिलेटेड है. बिकॉज देर इज अ प्रॉफिट मोटिव, एवरी प्रोड्यूसर वांट्स टू अर्न हायर प्रॉफिट्स एंड दैट इज द रीजन इट इज एन इंसेंटिव टू अ हार्ड वर्क. क्लियर? नेक्स्ट मेरिट ऑफ कैपिटलिज्म इज हायर रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन. कैपिटल फॉर्मेशन का इकोनॉमिक्स में सिंपल सा मतलब है इन्वेस्टमेंट. सिंपल. ओके. Profit motive provides incentive for higher investment, which results in higher rate of economic growth. Next merit, optimum utilization of resources. Optimum means proper utilization of resources in an optimum manner. Every person works according to his interest under capitalist economy and therefore uses the resources in an optimum manner. हर एक प्रोड्यूसर का मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट मोटिव. अब प्रॉफिट जो है वो कैसे मैक्सिमाइज होता है? अभी हमने रीड किया था, राइट? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट. सो इफ द टोटल कॉस्ट इज रिड्यूस्ड, डेफिनेटली द प्रॉफिट्स विल बी मैक्सिमाइज्ड. कोई भी प्रोड्यूसर अपनी कॉस्ट को क्यों इंक्रीज करना चाहेगा? तो वो रिसोर्सेज को, जो भी उसके पास रिसोर्सेज हैं, उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेगा, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेगा इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट्स. क्लियर? Next merit is technological progress. The desire to survive and earn higher profits in a capitalist economy leads to the development of new and improved techniques of production, because every producer wants to earn higher profits and this will lead to the development of new and improved techniques of production. Next merit is increase in production. अभी हमने जस्ट रीड किया टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. सो ड्यू टू द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट प्रोडक्शन इंक्रीजेस एंड this will increase the income of the people. Thus, the improvement in the standard of living takes place at a very fast rate. Last, we are going to do demerits of capitalism. Meaning हमने कर लिया, features हो गए, merits हो गए. This is last one, demerits of capitalism. First demerit is inequality of income. In capitalist economies, a very small section of people owns and controls a considerable part of national product and wealth. And as a result of this, one can witness affluence along with acute poverty, multi-story buildings along with slums, etc. Extreme inequalities are undesirable from moral, economic, social and political point of view. हमें पता है यहाँ पर जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उनका मेन मोटिव प्रॉफिट मोटिव है. प्रॉफिट मोटिव. वेलफेयर या सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में वो लोग नहीं सोचते. देयर मेन एम इज प्रॉफिट मोटिव एंड ड्यू टू विच देयर इज अ इनइक्वालिटी ऑफ इनकम. ओके. सो तभी यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं दैट वन कैन इट विटनेस एफ्लुएंस अलॉन्ग विद एक्यूट पॉवर्टी. वी कैन ऑल्सो सी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स अलॉन्ग विद slums. So there is inequality
and which is undesirable from moral, economic, and social and political point of view. नेक्स्ट वन इज वेस्टफुल कंपटीशन। हमने एक फीचर लीड किया था जिसमें हमने ये कहा था दैट प्रोड्यूसर्स compete with one another, right? They compete with one another on the basis of advertisement, right? And they may also cut the prices of their product. तो वो वही कह रहे हैं that there is enormous waste of productive resources as firms spend huge amount of money on advertisement and other sales promotion activities. So this is a waste of productive resources. This is a demerit of capitalism. Next, we have economic instability and unemployment. In a capitalist economy, instability exists due to the operation of different phases of trade cycles. Production decisions are in the hands of producers, and hence there is always a possibility of overproduction or underproduction. Boom periods are followed by depressions. ओके, तो वो ये कह रहा है यहाँ पर कि अब क्योंकि प्रोडक्शन डिसीजन जो है दे आर इन द हैंड्स ऑफ प्रोड्यूसर्स, तो ऐसा भी हो सकता है कि कभी ओवर प्रोडक्शन हो गई कि डिमांड इतनी है नहीं मार्केट में और ज़्यादा प्रोड्यूस कर दिया, या फिर अंडर प्रोडक्शन हो गई कि डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। सो बूम पीरियड आप कह सकते हैं जब जो इकॉनमी है, इकॉनमी का जो ट्रेंड है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, बेसिकली जो इकॉनमी की जो ग्रोथ है वो इंक्रीज हो रही। डिप्रेशन एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे जो इकॉनमी की जो ग्रोथ है वो नीचे की तरफ जा रही है, राइट? जो जीडीपी है हमारा या जो हमारी जो इकॉनमी की ग्रोथ है वो डिक्रीज हो रही है। दिस इज द सिचुएशन ऑफ डिप्रेशन। तो ऐसा भी हो सकता है कि कभी बूम पीरियड हो और कभी डिप्रेशन हो कैपिटलिस्ट इकॉनमी में। नेक्स्ट demerit is emergence of monopolies and concentration of economic power. Capitalism leads to the formation of monopolies as large firms may be able to drive out small ones by fair or foul means. तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है बिकॉज प्रॉफिट मोटिव है कि फर्म्स जो है वो अपनी मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश करेंगी, राइट? और अगर एक बार मोनोपोली क्रिएट हो गई तो ऐसा भी हो सकता है दैट सम लार्ज फर्म्स मे बी एबल टू ड्राइव आउट का मतलब कि द लार्ज फर्म्स may try to remove the smaller ones by fair or foul means. Foul means like जो हमने पढ़ा था that they may cut the prices of their product, जिसको हम इकोनॉमिक्स में कंसेप्ट बोलते हैं प्राइस वॉर का। तो द फर्म स्टार्ट प्राइस वॉर। अगर आपको फेयर मीन्स हो गए कि आप अपने प्रोडक्ट को या उसकी सेल को इंक्रीज कर रहे हो थ्रू द एडवर्टीजमेंट बेसिस, दैट इज अ फेयर मीन। फाउल मीन इज कि आप प्राइस वॉर आपने स्टार्ट कर दिया, आप इंटेंशनली अपने प्राइस आप इंटेंशनली अपने प्रोडक्ट के प्राइस को रिड्यूस कर रहे हो। अब लार्ज फर्म जो है वो तो चलो लॉसेस को फिर भी बियर कर लेगी, बट स्मॉलर वंस कब तक लॉस को बियर करेगी, राइट? तो स्मॉलर वंस उस सिचुएशन में मार्केट को लीव कर देंगी, मार्केट को छोड़ देंगी। तो वही कह रहे हैं दैट लार्ज फर्म्स मे बी एबल टू ड्राइव आउट स्मॉलर वंस बाय फेयर और फाउल मीन्स। Next demerit is misallocation of resources. There is misallocation of resources as resources are utilized for the production of luxuries for the rich, which have a higher profit margin than for producing the goods required for mass consumption. इसमें वो ये कहना चाह रहा है बिकॉज जो मेन मोटिव है वो क्या है? प्रॉफिट मोटिव है, राइट? सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में तो कोई सोच नहीं रहा है यहाँ पे। ओके, अब प्रॉफिट मोटिव के लिए प्रोड्यूसर जो है वो ऐसा गुड प्रोड्यूस करेगा इन विच he will earn a higher profit margin, right? So basically they are focused or they are utilizing their resources for the production of luxuries for the rich instead of producing the goods required for mass consumption। जो सोसाइटी की बेसिक नीड्स हैं, बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, वो प्रोड्यूस करने में उनका आई थिंक ज़्यादा इंसेंटिव नहीं है, और दे मे बी they may not interested in producing the necessity goods which is required for the mass consumption. Instead, they are utilizing their resources for the production of luxuries which have a higher profit margin. So this is misallocation of resources. Next demerit is self-interest in place of social welfare. The capitalist system ignores the social welfare because under capitalist setup the aim is profit एंड नॉट द वेलफेयर ऑफ द पीपल। ये तो हम ऑलरेडी काफ़ी बार रीड कर चुके हैं कि यहाँ पर जो मेन इंटरेस्ट है वो सेल्फ इंटरेस्ट है, वो प्रॉफिट मोटिव है इंस्टेड ऑफ सोशल वेलफेयर। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड।
Okay, in today's class we have covered up the capitalism, its meaning, features, merits and demerits. Okay, if you like the video, then please share it with your friends. Okay, thank you.